Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, that is culture, and today I will deliver its 10th lecture. So my dear students, let's start the lecture with a recap of the previous lesson. Listen to the question very carefully and then answer it. What are the advantages of multicultural society? एक मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ऑफ रिलीजन्स, ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफ क्लोथिंग, ईटिंग हैबिट्स, handicrafts, and what you like and what you do not like. So in that society, what are the advantages? First of all, you build acceptance and tolerance in you, and then you learn a lot of things from new people. इसके अलावा आपके अंदर जो है वो एथनिसिटी को भी एक्सेप्ट करने की जो है वो बैरियर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं एक जो दो कल्चर्स के दरमियान में होते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में डेवलप होता है, दैट इज़ यू बिल्ड न्यू आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट होते हैं. So my dear students, today the students will be able to define mass media, social media and differentiate between them. So my dear students, हम already I know कि हम ये SLO complete कर चुके हैं, but today we are going to make a project on this SLO. So my dear students, some pre-reading questions. What are the means of information? In social media, there is Facebook, WhatsApp, Twitter, and the mass media belongs, there is radio, television, and then print media, newspapers, articles, magazines. So these are all different means of information. So my dear students, now is a time for project. What is an article? ठीक है, आपको क्योंकि article writing करनी है project के अंदर. So basically article जो होता है that is a piece of writing other than fiction or poetry. तो कोई fiction या poetry के अलावा जो भी आप writing करते हैं, that is basically an article. So my dear students, this is your project given at the end of chapter unit number 2. So let's quickly look at the instructions given here. Divide the class into 3 groups. So your teacher will divide you into 3 groups and then she will assign you different topics. Group A will be assigned the biography of their favorite player. So जो first group है वो अपने favorite player की biography जो है उसके ऊपर एक article लिखेगा. Then the group 2 will write an article on safety issues. Group 3 will write an article on shortage of electricity. So my dear students, this is how you will be given 3 different topics, 3 different groups होंगे, 1, 2, 3 और उनको 3 topics दिए जाएंगे and then you will write the articles. Let's see the other instructions. Ask them to write an article on these topics and get the information from the media. ठीक है, आपको किसी भी means of information से, whether it is mass media, social media और print media, आप किसी भी media से जो है इन topics के ऊपर जो है वो information collect कर सकते हैं and then you can write an article. After that, give them 1 week for writing an article. आपके पास 1 हफ्ता होगा इसको लिखने के लिए और इसके बाद when you will submit it, इन तमाम आर्टिकल्स की फोटोकॉपीज जो हैं they will be distributed among the class randomly and then students will be asked to search and find how much of the information mentioned in the article is authentic. Write your article and submit it to your teacher. So my dear students, इसके बाद जब आपको सबमिट किया आपको ये आर्टिकल्स की फोटोकॉपीज जो है तमाम क्लास को दी जाएंगी क्योंकि हर ग्रुप ने अपना अलग अलग काम किया है. तो यू विल बी given different copies of articles. आप ग्रुप A की कॉपी जो है वो ग्रुप 2 को दी जाएगी, ग्रुप 2 की ग्रुप 3 को दी जाएगी. तो दिस इज हाउ द कॉपीज विल बी गिवन. उसके बाद आपको ये सर्च आउट करना होगा कि वेदर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द आर्टिकल जो आपके फेलो स्टूडेंट्स ने लिखी है, इज इट करेक्ट, इज इट ऑथेंटिक. तो इस तरीके से जो है वो आप लोग आर्टिकल राइटिंग करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ टू कलेक्ट एन ऑथेंटिक न्यूज़. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप A विल स्टार्ट विद देयर फेवरेट प्लेयर. तो जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो देयर विल बी सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. तो सबसे पहले आपको राइट डाउन द नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, एंड इफ ही इज लेट और दैट मीन्स ही हैज डाइड, so you will write the death date also. Then current location of residence, educational background, professional experience, area of expertise and major achievements. So this is how you will
write down an article on your favorite player. तो आपको वो कौन सी नेशन से बिलोंग करता है, क्या उसकी नेशनैलिटी है, क्या नेम है, क्या बिग बैकग्राउंड है, क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, कब उसने अपने फेवरेट गेम को ज्वाइन किया. फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट प्लेयर इज रॉजर फेडरर, मे बी योर्स इज शाहीन आफरीदी और शादाब खान. सो रॉजर फेडरर इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज अ टेनिस प्लेयर. तो इस तरीके से ही इज अ स्विस प्लेयर, और इस तरीके से आप जो है वो आप अपनी जो है डिफरेंट जो है वो करेंगे. और ही इज नंबर 1 टेनिस प्लेयर. तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करेंगे. द ग्रुप 2 विल राइट डाउन द आर्टिकल ऑन सेफ्टी इश्यूज. So, common workplace health and safety hazards include communicidal disease, transportation accidents, workplace violence, slipping and falling, toxic events, particularly chemical and gas exposure and explosions. So, कोई भी जो safety issues है जो you must keep in mind while you are in kitchen, while you are on roads, while you are using electrical appliances. तो किस तरीके से आपको सेफ्टी इश्यूज का ख्याल रखना है, यू हैव टू कलेक्ट अ डाटा ऑन दैट. यू कैन यूज एनी मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कलेक्टिंग द डाटा, एंड देन यू हैव टू राइट योर आर्टिकल. ग्रुप 2. देन ग्रुप 3 विल राइट डाउन एन आर्टिकल ऑन शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, वाई इट इज सो. सो लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वीक गवर्नेंस होती है, एनर्जी सेक्टर मिसमैनेजमेंट हो सकती है, एंड देन हाउ टू ओवरकम दिस शॉर्टेज. क्योंकि फॉसल फ्यूल्स से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, फॉसल फ्यूल्स आर लिमिटेड, सो वी मस्ट यूज सच रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल, लाइक सोलर पैनल्स आप यूज कर सकते हैं, विंड मिल्स यूज कर सकते हैं. सो ऑल्सो गिव द आइडिया हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस. ओके, सो ग्रुप 3 विल राइट एन आर्टिकल ऑन storage of shortage of electricity. So the guidelines here are, again I am repeating, you will get your information from any media. Information means से आप ले सकते हैं mass media, electronic media, print media or social media. Collect the information and write down the article. Next is your homework. Note down the homework, complete the project. Your time is 1 week, and submit the article to your teacher. You will photocopy it and submit it to your teacher. And after that, what the teacher will do is she will distribute the copies among the class, and then you have to research that is the news given in the article is correct, authentic or fake. So my dear students, today what we have learned, you will complete this project in your class according to the guidelines and instructions that I have given you. So today we have learned that to make use of social mass and print media in our daily life. तो आज हमने ये देखा कि कैसे हम different means of information जो है उनको daily life में use कर सकते हैं और ये कितने beneficial है हमारे लिए. I hope you have learnt a lot of things from today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.